आपसे रिश्ता है प्यार का। आपसे रिश्ता है प्यार का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो वन फॉर न्यूयॉर्क। नाज़रीन, अमेरिका में बारे में कहा जाता है कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट एज वेल। हम बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट से यहाँ आ गए और यहाँ के बस गए, और हम लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से और यह हमें जो समझ आया उस हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, और यहाँ अपने बच्चों को लेकर आए और उन बच्चों को यहाँ की तालीम से आरास्ता किया और उनको यहाँ के मेन स्ट्रीम सिस्टम में डालने की कोशिश की। जैसे कि ये पूरा मुल्क इमिग्रेंट के ऊपर बेस करता है, जो दो तीन यहाँ पे कौमें आईं, उन्होंने किसी ने जल्दी काम शुरू किया, किसी ने लेट काम शुरू किया। हम शायद समझते हैं कि हम पाकिस्तानी या इंडियंस या हम थोड़ा लेट थे, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जो नस्ल है, दे आर नाउ टू मेन स्ट्रीम, और वो पॉलिटिकल एरिना में काम कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। वो सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? जब हम हमारे पास, और वो है वोट की ताकत। जब हम अपने वोट रजिस्टर कराएंगे और वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे, तब उनको हम अपने ला सकेंगे। सिर्फ सिटीजनशिप लेने से या सिर्फ अपना पासपोर्ट बना लेने से काम नहीं होगा। येस, इज़ गुड फॉर यू ट्रैवलिंग, बट यू हैव टू एक्ट एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने लेनी पड़ेगी कि अपनी नुमाइंदगी करवाने के लिए अपने बच्चों को, अपनी कौम के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को लेकर आए यहाँ पे। इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सूरज पटेल साहब। सूरज पटेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सूरज इज़ रनिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट NY12, न्यूयॉर्क 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इनके बारे में मज़ीद ये ख़ुद भी बताएंगे आपको। मेरे साथ इसके अलावा मौजूद हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब। चिश्ती साहब का ताल्लुक़ जो है वो गरीब नवाज़ अपना अजमेर शरीफ से है, और माशाल्लाह गद्दी नशीन है। थैंक यू फॉर कमिंग, और बहुत शुक्रिया आपको आने का। और इनका शो, ये जो शो में आज इसलिए आए हैं ताकि चूँकि हम सब का जो ताल्लुक़ एक ही जगह से रहा है और हम एक ही कम्युनिटी हैं एंड ऑफ द डे, तो ये इनको हमें चाहिए कि हमें लोगों को सपोर्ट करें, और सपोर्ट ना सिर्फ बातों के हिसाब से, इनके साथ इन कैंपेन्स में जाएं, अपने लोगों को बताएं। हो सकता है कि जहाँ ये शो जा रहा है वहाँ पे आप वहाँ ना रहते हों, लेकिन इनकी कंस्टिट्यूंसी में कम से कम आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त रह रहा है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि ये लोग घर से निकलें, वोट डालें। वोट जो है इनकी है वो ट्यूसडे को होगी और सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जारी रहेगी। आपको इस सिलसिले में अगर ट्रांसपोर्ट का इशू है या किसी भी चीज़ का इशू है, तो उनका एक टेक्स्ट का इन्होंने सेटअप किया हुआ 738-674 टेक्स्ट देसी को आप जब करेंगे तो दे विल अरेंज एंड दे विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू गेट टू द पोलिंग स्टेशन। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं सूरज पटेल साहब से पूछता हूँ। सूरज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू गेट इनटू द पॉलिटिक्स, और अब तो पहले बैकग्राउंड बताइए कि आपने व्हाई यू आर इन पॉलिटिक्स। So, you know, I'm a son of immigrants as well. My family moved from India to the United States in the 70s and 80s. So, growing up here, I was born in Mississippi. And growing up here, I realized that if we are, as a community, going to be accepted not only as outsiders in this country, but actually as part of this country, then we have to be represented in its leadership. So at a young age, I was working for the mayor of my town, Indianapolis, Indiana, where I was born, or where I grew up. But I went to Stanford University for college and studied political science. And then Cambridge in England for a master's in public policy. And NYU for law school, so I'm a lawyer here. In the middle of the way through law school, I got very inspired and left law school to join the Barack Obama campaign in 2008. Okay. And I worked for Barack Obama for 6 or 7 months that year, helped get him elected, finished law school, worked again for him in 2012, and throughout the White House years, traveling on their behalf.
And so that was the story of how I was involved in politics. I saw firsthand how a campaign premised on bringing people together instead of using hate and divisiveness can be beneficial to everybody in the country. And so we're trying to run the same kind of campaign, one premised on engaging and including everybody. So ये मुझे बताएं कि since New York is a very diverse city, right? एक खास तौर पे जो आपकी constituency में a lot of people, lot of community from different part of worlds. So how you are reaching them, or how did you reach them? Because it's almost the end of the campaign आपकी हो रही है, because Tuesday को अगर vote casting. Yeah, Tuesday is the day. This district is special. I live in the East Village, okay, but it goes Upper East Side, Midtown East, Murray Hill, East Village, Lower East Side, all of Midtown to Chelsea. This side of the river, Greenpoint, Williamsburg, Long Island City, and Astoria, and Roosevelt Island. And so that is a tremendous amount of diversity. We have major populations of Pakistani voters, Bangladeshi voters, Indian voters, white voters, obviously. We're the largest public housing community in the country, in Queensbridge, right? So there's so many different people to reach, and we have been doing it by being in every single part of the district. I'm there every day, meeting people in real life, going to delis, going to coffee shops and stores, laundromats and bodega owners. Even right now, the immigrant community has rallied around this campaign. Mm-hmm. There are 50 coffee carts in the city right now, distributing 200,000 coffee cups with Vote June 26 on them. So एक और चीज़ which is very important here कि normally ये होता है कि when I talk to the people, खास तौर पे अपने ही हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े हैं यहाँ पे, उनसे जब मैं बात करता हूँ कि हम अपने बच्चों को जब हम देख रहे हैं तो उनको सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा, we have to support them as well. बट उनके कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये तो अभी यंग हैं, ये कैसे मेन स्ट्रीम पे जाके बात करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, ये हमारा क्या काम करेंगे, हमारे लिए क्या फ़ाइट करेंगे, बिकॉज दे आर जस्ट आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस है या रिप्रेजेंटेशन है आपकी, ताकि under which banner you basically work for? So I mean, I've been a Democrat, and work for the President Obama, but now I'm running as a Democrat as well, because specifically right now, our communities, a Muslim community in particular, has somebody in the White House who does not respect us. After the Trump election, when the Muslim ban came down, I was at JFK as a volunteer attorney, trying to fight that ban, trying to get people released from custody who are just being held simply because of their religion. Yeah. Yeah, and so I've been at the forefront of that fight, and will continue to be a fighter for Muslims and any other marginalized population in this country, no matter what, especially our community. So, आपके ख्याल में what is the basic problem going on with the people here in our community कि उनकी कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि जहाँ पे उनकी lacking है, and if you are there you can help them out? Yeah, two things. So, as an immigrant and someone who's been around immigrants my whole life, I didn't need to wait until last week to hear about how bad ICE is. Yeah. We've known for years that ICE is bad for our communities. We've known for years they go to our mosques, in our schools, in our hospitals, in our courthouses, and they scare people, and they deport people, and they round up and target undocumented immigrants, but also kind of make it difficult for legal immigrants in this country to reunite with other family members and all of that. And so I was the first candidate to call for the defunding of ICE if Democrats take back the House. Back in March I said that, long before all of this family separation and things happened. So I am a big supporter of comprehensive immigration reform, a citizenship for all 11 million people living here that do not have documentation, but then a major increase in legal immigration, green cards and visas, especially for high-tech skilled workers, but all people. And one thing that faces our community particularly, is 20 and 30-year visa and green card backlogs for India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. That's not a just system. There's no way you can reunite with your family if you wait 20 years. Then you have an undocumented immigration problem. So I think we have to dramatically increase
our legal immigration quotas. Great. And then for the communities here, the same problems that plague our communities plague all working people in New York. We need affordable housing. The cost of housing is too high, so we need lots of more development, period, of housing market, public, and subsidized and affordable. We need to absolutely offer debt-free college. I was able to do this in one generation and run for Congress merely 50 years after my family got here, because our communities really emphasize education. It's the ladder. It's the ladder we use to get ahead in this country and get representation. And so I was able to go to, like I said, Stanford and NYU and Cambridge. And I was fortunate enough to have a family that can support that. But every single person in this country should be able to go to college without taking on debt. All of our families have to decide how can they raise enough money, because $30,000 and $40,000 and $50,000 a year almost to go to college is crazy. Imagine if you have 5 or 6 kids. Nobody can afford that. But New York में recently ये हुआ था कि like जो New Yorkers हैं उनके लिए colleges tuition fees almost free here. Oh yeah, some universities only. Yeah. Only state universities, and you have to qualify in a lot of different ways for it. But nationally, so I'm running for U.S. Congress. Nationally, I think that should be the case everywhere. Okay. Now, since you are running, we wish you all the best. Meanwhile, you guys have to do something, because जिस तरह आप आगे आ रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो भी आपके साथ के बहुत सारे हमारे लोग होंगे जो कॉलेजेस में पढ़े, आप उनको मैसेज कैसे देना चाह रहे हैं कि they should, or any like student organization are with you working on this your campaign or those stuff, because किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, देयर सर्टन ग्रुप्स हैं जो कि साउथ एशियन है या पाकिस्तानी है या इंडियंस हैं, एंड दे हैव अ होल एक सेटअप, तो उसको उनको आपने अप्रोच किया उन ग्रुप्स को? Absolutely. We have done so much college outreach altogether. My campaign itself is full of 25 employees and 69 interns, almost all college age. So how was your, अच्छा जब ये political area में आप देखते हैं तो यहाँ पे एक major चीज़ होती है which is fundraising. So how did your fundraising campaigns went, and कैसे support किया लोगों ने आपने? How you? I mean, we were able to outraise a 25-year incumbent by taking donations from human beings. She takes money from corporations and corporate PACs, almost exclusively, or almost half, and then regulates those very same companies that she takes money from. Whereas, I'm raising money from primarily lots of people in the South Asian community, Pakistani, Indian, Bangladeshi, everywhere, who is looking for representation in this city. Did you know there are 51 city councilmen and women in New York City? There are 63 state senators, 150 General Assembly members, almost 4 dozen state, federal, and locally elected officials. Not a single one is of South Asian descent. Not a single Pakistani, Bangladeshi, or Indian. And so there's a lot of people looking for and thirsty for that kind of representation. Okay. अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा सर्वशिष्ट साहब से। शिष्ट साहब बताइए कि हमारी आप विज़िट कर रहे हैं इंडिया से यहाँ पे, और आपका जो ताल्लुक़ है वो रहा है एक ऐसे ही सिलसिले से जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में, और उसमें वहाँ कोई तमीज़ नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इट्स ऑल लाइक देयर। तो यहाँ जब आप देखते हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को देखते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है, तो व्हाट इज़ योर, आप क्या उनको इंडोर्स करते हैं, कैसे देखते हैं उनका आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सरवर चिश्ती आस्ताने आली हज़रत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से 850 साल की हमारी लेगेसी ये सादात हैं, और जारूब कश आस्ताने अक़दस हुज़ूर ग़रीब नवाज़ हैं। ये हमारे ब्लड लाइन में है, और बाहर का हुज़ूर ग़रीब नवाज़ का एक ट्रेडिशन ये रहा है कि वो कंपोजिट कल्चर और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को एड्रेस करता है। गंगा जमनी तहज़ीब जिसे हम कहते हैं बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ हर मज़हब व मिलत के लोग आते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, जब आया तो इनके कोऑर्डिनेटर आए मिस्टर दिलीप चौहान, कहा कि एक बच्चा है हिंदुस्तान की ओरिजिन का है और यहाँ पे पला बड़ा है, एंड ही इज़ वेल एजुकेटेड एंड ही इज़ फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। देखिए यहाँ आने के बाद तो चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन है और उस खित्ते को बिलोंग करता है,
तो एक तरह से मोनोलिथिक एथनिक ग्रुप हो गया, क्योंकि हेरिटेज एक है, हिस्ट्री एक है, कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, चेहरे एक जैसे हैं, फूड हैबिट्स एक जैसी हैं, तमाम एक मज़हब को छोड़कर। यहाँ पे आने के बाद ना वो इंडियन है ना पाकिस्तानी है। मैंने देखा इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों में बड़ी एफिनिटी है, बड़ी कुर्बत है। तो ये जो बच्चा है, मैं अच्छा फिर ये है कि हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पे अजमेर शरीफ में कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जब इनके बंदे आए तो मैंने बहुत उस पर गौर व फिक्र किया कि मदद मांगने आए और जायज़ मदद है कि जो लोग जब यहाँ आके मुकीम हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान और सिटीजन्स यहीं के हो गए, कश्तियाँ तो उन्होंने जला दी, अब यही है इसी मेल्टिंग पॉट में उन्हें मेल्ट होना है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में आपकी अपनी पॉलिटिकल वॉइस होना चाहिए, आपका सियासी वजूद होना चाहिए, तभी आपकी बात वहाँ दरबार तक पहुँचेगी। यही एक तरीका है। और वो तरीका ये है कि जब तक आप अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे और उसको वोट नहीं देंगे और पोलिंग वाले दिन जाके बैलेट में नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वही कोई मुसल्लत कर दिया जाएगा, इम्पोज कर दिया जाएगा, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। फिर मैंने इस बच्चे सूरज का ये देखा कि इसके क्रेडेंशियल्स को देखा कि जब 6 मुस्लिम कंट्रीज़ के वीज़ाज़ पे रोक लगाई तो सूरज ने उनके लिए फ़ाइट की। तो ये हमारा ही बच्चा है। देखिए इंडिया पाकिस्तान कोई अलग चीज़ तो है नहीं, वो वहाँ पे ठीक है झगड़ा कर रहा है, अल्लाह करे वो झगड़ा भी ख़त्म हो, लेकिन यहाँ पे तो एक जैसी बात है ना, एक ही एथनिक ग्रुप है ये। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसकी हिमायत की जाए और पाकिस्तानी हज़रात से भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। देखिए बर सग़ीर में इस्लाम के दाई और मुबल्लिग़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, चाहे किसी भी मसलक का हो, इस बात से तो कोई एतराज़ कर ही नहीं सकता। आप नायबुन नबी हैं, अताए रसूल हैं, और इत्तेफाक की बात है मैं यहाँ हूँ तो मैं जब यहाँ पे भी आया हूँ तो मुस्लिम कॉज तो हमेशा जहन में रहता ही है मेरे। तो आप लोगों के मफाद में है कि इसको वोट करें। और मंगल को रोज़, ट्यूसडे के रोज़ पोलिंग है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। भाई लेथार्जी छोड़ें, सुस्ती छोड़ें, वोट डालने आए। अब आप पाकिस्तान में नहीं रह रहा है, अब आप अमेरिका में हैं, आपके अपने हुकूक हैं, आपके नस्लों के हुकूक हैं, बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी अपनी वॉइस होना चाहिए, उनकी अपनी से होना चाहिए। तो सूरज है, इसको आप वोट दें। साहब इसको हम बात को अभी कंटिन्यू करेंगे, कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। सो नाज़रीन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कम आफ्टर दैट। एंड इफ़ यू नीड टू टॉक, बात करना चाह रहे हैं अपना सूरज पटेल साहब से, तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है, नज़र आ रहा है, सो यू कैन कॉल एंड टॉक टू हिम एज वेल। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।